Hey guys, welcome back to this new video. And in today's lecture, we are going to discuss the insertion and deletion of data in binary search trees. Okay, so let's start. So, first of all, let's have some elements 11, 6, 8, 19, 4, 10, 5, 17, 43, 49, and 31. Okay, so let's insert this data in tree one by one. Okay, so let's shorten this a bit. Okay, so this is 10, not 16. Okay, so the first element is 11. Okay, so 11 as it is. Now the next element is 6. So 6 is smaller than 11, so should be in the left side of 11. Now 8. 8 is smaller than 11. Okay, so should be in the left side of 11, but greater than 6. Okay, so 8 should be somewhere here. Got it? Now 19. 19 is greater than 11. So in the right side of 11. Now 4 is smaller than 11. So left hand side. Now smaller than 6. Again left side. Got it? Now 10. So 10 is less than 11. So in the right side. It is greater than 6. Okay? So in the right side of 6. Now it is again greater than 10. So in the right side of 8. Got it? Now, where is 5 should be placed? So, first of all, we will go to the left side of 11, okay, because it is smaller than 11. Now, it is smaller than 5, so should be left side of 6. Got it? Now, it is greater than 4, so this should be here. Now, where is 17? 17 should be placed here. And what about 19? No. And what about next element, which is 43? So 43 is greater than 19. So 43 should be here. 49 should be here. And the last element is 31. So 31 is here. See, you don't need to balance this tree because it is not an AVL tree. Okay. Just simply add the element based on the properties of binary search tree. That is, all the elements which are less than the root element should be present on the left side of the root node, and all the elements which are greater than the root node should be present on the right side of the root node. Okay, got it? Easy. Now let's talk about the insertion. Okay, so let's revert some changes. Okay, so for deletion we have three cases. Got it? So the first case is when you want to delete a node with 0 child. Second case is when you want to delete a node with one single child. And the third case is obvious, with two children. ठीक है? तो यही तीन केस बनते हैं. Now let's talk about how do we deal with these conditions. Let's suppose you want to delete a node that have no children, that is either 31, 49, 5 or 10. Let's suppose I want to delete 31. Okay, as this node has no children, you just simply remove this connection. Okay, so now the whole tree will look like this. Got it? Easy. You don't need to balance it because it is not an AVL tree. Fine. So you delete a node that has 0 children, okay, or the node which is the leaf node. Now the second case is when you want to delete a node with single child, that is either 4, 8, 43, and yeah, these are the cases. Got it? So let's suppose I want to delete this 4. Okay,
So how do I delete it? First of all, replace this 4 with the child node, that is 5 and 4, and now simply remove this connection. ठीक है? So the result will look like, just a minute. Okay, result will look like this. ठीक? Now the final case is when you want to delete a node that has 2 children. So let's suppose it has 31% here. ठीक? Now you want to delete 43, or let's take a worst case scenario which is the root node. ठीक है? तो रूट नोड को डिलीट करते हैं, एंड रूट नोड हैज 2 चिल्ड्रन विच इज 6 एंड 90. ओके, तो जब भी 2 चिल्ड्रन को डिलीट करने का केस आता है तो हम 2 चीज करते हैं. ठीक है? इन ऑर्डर प्रीडेसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर. ठीक है? अब इनको ढूंढने का 2 तरीके हैं, वो मैं बताता हूँ. सबसे पहले तो आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिख लो. ठीक है? जो भी ट्री आपका बनके तैयार हुआ है, इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिख लो. ठीक है? देन जो भी नोड आपको डिलीट करना है, लेट्स सपोज आई वांट टू डिलीट 11, तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में 11 से जस्ट पहले जो भी वैल्यू होगी वो होगा उसका इन ऑर्डर प्रीडेसेसर, और 11 के जस्ट बाद की जो वैल्यू होगी वो होगी इन ऑर्डर सक्सेसर. ठीक है? अब एक तरीका तो ये हो गया. अब अगर आपको इसका ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल नहीं निकालना तो कैसे करेंगे? तो जो भी नोड आपको निकालना है, यानी कि डिलीट करना है, जैसे कि मुझे अभी 11 को डिलीट करना है. ठीक है? सो आई हैव ओके दिस एंड दिस. ओके, ठीक है, तो मुझे 11 को डिलीट करना है. तो इन ऑर्डर प्रेसिडर जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड के सब ट्री में लार्जेस्ट वैल्यू होगी, और जो सक्सेसर होगा इन ऑर्डर सक्सेसर वो राइट हैंड साइड के ट्री में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, यानी कि 17. ठीक है? दोनों में से आपको जो भी तरीका सही लगे आप वो अपना सकते हैं. सो अगर मैं 11 को डिलीट करूं तो या तो मैं 11 की जगह 10 कर सकता हूं या फिर 17. ठीक है? यानी कि जब भी बाइनरी सर्च ट्री में से कोई ऐसा नोड डिलीट हो जिसके 2 चिल्ड्रन हैं तो उसके 2 केसेस बनते हैं. ठीक है? 2 पॉसिबल ट्रीज बनते हैं. तो जो 2 रिजल्टेंट ट्री होंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होंगे. ठीक है? उन्हें मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग. सो 11 को रिप्लेस कर दिया मैंने 10 से, सो 10 यहाँ रहेगा. देन यहाँ पे 6 था, इधर 4, इधर 5. ओके, सो 6 के बाद 8 था, 10 के राइट में 19, देन 17, 43, 31 एंड 49. ये था जब मैंने इन ऑर्डर प्रीडिसेसर का यूज किया. ठीक है? अब इन ऑर्डर सक्सेसर कैसे बनेगा? सो सक्सेसर के लिए मैंने बताया था राइट हैंड साइड में सबसे छोटी वैल्यू. ठीक है? तो 17 ऑब्वियसली, देन 6, 4, 5, 8, और यहाँ 10% होगा. ठीक है? नाउ हियर 19, 43, 31 एंड 49. So these are the 2 possible cases. Okay? So I hope ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी. This is all for this lecture. Till then, happy coding.